I remember. The poem is looking back about childhood days. It is about nostalgia that we have towards our childhood. Now, childhood to most people is very loving. Mm, We have fond memories of childhood. So, here in this poem, the poet remembers his childhood and he wants to go back to his childhood. And we all have our childhood memories. Some people used to make paper boats, some people used to listen to their childhood, uh, used to play with the childhood friends. Some people have this memories of listening to grandmother, some people making, on the beach, making sand castles. So we all have some memories regarding our childhood. So this poem is asking us or is telling us that childhood is the best period of one's life according to the poet. So he says, I remember. पोएट से हमको याद है क्या वो बचपन के दिन है, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, वो दादी की कहानी, वो छोटी सी रातें और लंबी कहानी, वो बुढ़िया जिसे बच्चे कहती थी नानी, ये सब बच्चों को याद होता है बड़े होने के बाद भी. So poet says, I remember what? Of course, it's a Western poem, so it may not be like Indianized memories, but still the emotions are same. So poet says, I remember what? The house where I was born. So maybe, not maybe, after globalization, most people where they are born, they have to go somewhere to work. Abroad, they have to go to many places, or at least in the same country, they have to go to a better place where they can earn better. So poet, it seems, does not live in the house where he used to live. So the house has become very important in terms of nostalgia, in terms of emotion attached to it, in terms of love that he has for his country, for his house, for his native place. So poet says, I remember the place, the house where I was born. So poet को याद है कि वो बचपन में जहाँ वो रहता था, एक छोटा सा घर था, sunlight आता था. And the sun came peeping at the morning. Peeping मतलब झांकना. अंधेरा खत्म होते ही सुबह झांकने सूरज आ जाता था. और ये सूरज, sun has been described as a human being. Here the sun is personified as a human being. So poet used to enjoy the morning sunlight. So he remembers the house where he was born, वहाँ छोटा सा खिड़की था, और उस खिड़की में सूरज आता था daily. The sun, he माने sun, never came a wink too soon. मतलब एक wink माने एक second भी soon नहीं आता था. मतलब the sun had an appointed time, and the sun always came on the appointed time, never too early, never too late. The sun never came. He मतलब sun. Never came a wink too soon. माने सूरज कभी भी जल्दी नहीं आता था. जब आना था, जितना बजे टाइम फिक्स था उतना ही बजे आता था, उससे पहले कभी नहीं आता था. Nor bought a day long to, मतलब द सूरज जल्दी तो नहीं आता था और जल्दी से जाता भी नहीं था. जितना बजे उसका अपॉइंटेड टाइम था उतना ही बजे जाता था. Nor bought too long a day, मतलब डे को लंबा नहीं करता था. The limited period of time that the poet had, poet used to only spend that much of time. मतलब poet बोल रहा, सॉरी, सूरज, मतलब सूरज को सपोज 10 घंटा रहना. So sun never bought the day long, मतलब दिन को कभी वो लंबा नहीं करता था. जब जाने का टाइम था चला जाता था, आने का टाइम था उससे एक सेकंड पहले भी नहीं आता, उतना ही बज जाता. The sun seems to be very balanced and very punctual. It never came 1 second early or never remained 1 minute later. Nor bought too long a day, मतलब दिन को कभी सूरज लंबा नहीं करता था, ना ही अपने टाइम से पहले आता था. सूरज ठीक अपने टाइम पे आता था, टाइम पे आता था. But now I often wish the night had borne away my breath away. So poet remembers his childhood where there was no, tension, no frustration, no stress, no pressure. So वो बचपन के दिन याद आ रहे पोएट को. नहीं से कि वो रात जब हम सोते थे, ओके, और सुबह सूरज आता था उस छोटे से खिड़की में,
सो पोएट विश आई काश कि उसी रात मेरा आखिरी हो जाता। क्यों इतना मरने का शौक क्यों? Why is the poet desperate to die in the night? Because that night was filled with love, with care, concern. It was free from the rat race. It was, free from the humdrum of life. It was free from that, target-oriented life. It is free from all those ego. It is free from all those false sense of prestige. We buy things that we don't need, and we have people that we actually don't respect. So ये सब ऐसे जिंदगी से बाहर निकलने के लिए poet is wishing he could have died. Now there are two things here. Now see, there are certain benefits of being a child, but there are certain flip side to being a child, right? If you're a child, you can't be a great earner. Okay, as a child, you can't hold power to a corporation. You can't become CEO of a company. So CEO of a company normally adult ही होते हैं. 5 साल के बच्चे normally तो नहीं होते हैं. So adulthood has its own benefit, but according to the poet, these benefits, ये दौलत, ये शोहरत, ये नाम, ये ओहदे से अच्छा है वो बारिश का पानी जिसमें बोर्ड बनाते थे, वो खेलते थे. तो पोएट के लिए वो बचपना का वो चोट लगना, वो फिर दौड़ के भाग जाना, फिर दोस्त झगड़ा होना, फिर मिल जाना विदाउट ईगो. बड़े को कोई को बोल दे तो दे रिमेंबर फॉर 25 years. Child, they again play after 25 minutes. And they say katti, then they again talk. So poet, according to poet, I'm not asking you to believe his theory, I'm asking you to know his theory and write in the answer. So all this achievement of being an adult, ye naam, ye shohrat, ye daulat, ye kamyabi, ye position, ye fame, so on and so forth. ये सब चीज से अच्छा है according to Thomas Wood, poet, वो बचपन का innocence. So there's a famous line, वो दौलत भी दे दो, वो शहरत भी दे दो, ले लो, मगर मुझको लौटा दो वो बचपन के सामान, वो कागज की कश्ती बोट. ओके, कागज की कश्ती, वो बारिश में उसको कागज की कश्ती को बारिश में बहाना. The poet wants to get back his childhood, or rather he wants to die in that moment. Now he is so much in love with his nostalgic moment that he wanted to die in the moment in which he was a child. So from the beginning, let me revise it once more quickly. The poet remembers his childhood. And how can anybody forget his childhood? So I remember is a figure of speech where there's a repetition in front of every, at the first line of every stanza. The poet says, I remember the place where he was born. The sun used to come in the morning, and used to peep. धीरे धीरे सूरज आता था. और सन नेवर केम विंग टू सून, मतलब सूरज कभी टाइम से पहले नहीं आता था. नेवर ब्रॉट ए लॉन्ग टू डे, मतलब दिन को कभी वो लंबा नहीं करता था. जितना टाइम आने का था, जितना टाइम जाने का था, द सन यूज्ड टू गो एट द अपॉइंटेड टाइम. नाउ पोएट सेज, नाउ आई विश द नाइट हैड टेकन माय ब्रेथ. उसी रात को मेरी सांसें रुक जाती जब हम छोटे थे तो ही बेहतर था. ये बड़ा होके टेंशन, ये बड़ा होके फ्रस्ट्रेशन, ये होपलेसनेस, ये डिसअपॉइंटमेंट, ये रायट, ये poet के लिए this is beyond his handling capacity. He is overwhelmed by these challenges of life. So he says, I wish I would have died. Next stanza, I remember the roses, the rose flower, the red color flower, the white flower, the lily, violet flower, the lily cup. So poet बचपन में इतने सारे फ्लावर के बीच में वो गांव में रहता था, तो रंग बिरंगे फ्लावर्स होते थे और रंग बिरंगी जिंदगियां होती थी. वो खेल, वो roses flower, white flower, lily cup, those flowers made of light. लाइट उस पे गिरता था, दूर से देख के लगता था लाइट का ही बना हुआ है. तो कितना हल्का था. और the sunlight used to make the flower look so different, so unique. The lichas where the robin built, where my brother said the laburnum on his birthday, the tree is living here. So poet is saying कि बहुत सारे फ्लावर थे और वहां पे एक रॉबिन बर्ड अपना घोंसला बनाया था, और वहीं पे पोएट के भाई ने एक लबनन, मतलब इट्स नेम ऑफ ए ट्री which keeps on hanging from the hour. It's the name of a flower. ऊपर से ऐसे शादी में, मतलब देखिएगा आजकल when दूल्हा आने वाला होता है, ब्राइड मतलब बारात आने वाला होता है, तो the decoration they have the hanging flowers, वैसा ही होता है लबनन.
So poet is talking about different colors of flower that you used to experience. The laburnum flower, the white, the lily, okay, और वो रॉबिन बर्ड जो घोंसला बनाती थी, और वहीं पे laburnum उसके भाई ने बचपन में लगाया था, वो ट्री आज भी है, लेकिन भाई नहीं है. According to many scholars, according to workbook and so many biography of the poet, when the poet is writing these lines, his brother is dead, so the brother is not there, but brother का वो लगाया हुआ ट्री है. So शायद उस ट्री से पोएट को अपने भाई के याद में गुम होने में आसानी होता होगा. So this is probably the link between the memory of his brother and him. This is reminding poet how much his brother loved him, cared for him. So भाई नहीं है लेकिन भाई के लगाए हुए ट्री है. So this is a nostalgia. It's a very sentimental kind of thing. Adult would not understand it. Only people who have an extreme kind of sensitivity would understand that laburnum tree, we are not talking about the material value. We are talking about the emotional value that we attach to even insignificant things. So this laburnum tree, the flower tree hanging from our, is not $1 million plant. It's probably few dollar plant. But since poet childhood memories are attached to it and his brother who planted it is no more, so this laburnum tree has become all the more significant. So poet remembers the different color flower, the robin, चिड़िया जिसने घोंसला बनाया था लेकर्स फ्लावर के, वहाँ इतने सारे फ्लावर, सनलाइट उस पर गिरता था, कितना लाइट का जैसा चारों तरफ बिखर जाता था. पोएट को ये सब कुछ याद है. Extend. I remember when I used to swing. Poet had a swing, झूला था. बच्चों को झूले से बहुत प्यार होता है. बड़े सिर्फ साल में एक दिन बच्चों के साथ जाते हैं पार्क में, तो इको पार्क में जबरदस्ती बच्चे के झूले में झूलाते हैं. So actually every adult is a child in a grown-up body. Every adult is a child in a grown-up body. Few people lose their childhood, some retain their innocence for the rest of their life. This poem is a salute to them who remain the child, who keep up the child within, who don't let the child die. I remember when I was a small boy, poet is saying, I used to swing. So the air must rush as fresh as the swallows on the wing. So poet used to move in the swing, and the swing में ऐसे होता था, and the air rush as fresh, और ये ऐसे होने से हवा यहाँ से ऐसे जाता था. Okay, as fresh to swallows on the wing. Poet is saying कि हम ऐसे जाते थे जैसे wings लेके swallow चिड़िया जाती थी, तो हम लोग भी अपना पैर हाथ ऐसे फैला के झूलते थे झूला में. So the poet on the swing is compared to the bird with its wings spread apart. So poet जब वो झूला में झूलता था उसको कंपेयर किया गया चिड़िया जो अपने पंखों को फैला के खेल मतलब उड़ती थी. My spirit flew in feathers then, but is now so heavy. Narrator is saying कि जब हम वो झूले में झूलते थे वो चिड़िया के विंग्स के तरह, तब मैं सोल बहुत लाइट था. तब आई वॉज लाइक ए फेदर, हवा में उड़ने जैसा मन खुला हुआ था. मैंने चिंता फ्री था, स्ट्रेस नहीं था, ओके, टारगेट्स नहीं थे, टॉर्मेंट नहीं थे, टॉर्चर नहीं थे, कमिटमेंट नहीं था, ओवर कमिटमेंट नहीं था, अंडर प्रॉमिस नहीं था. ये सब हाई साउंडिंग वर्ड नहीं थे. दिल बहुत शांति और सुकून से था. वो मार्वल से खेलते थे, वो नाली कादा में गिर जाते थे, ओके, हाथ कट जाता था, फिर भी याद नहीं रहता था. दिल एकदम इत्मीनान था. अब now the heart has become very heavy. Now as if he is carrying a burden on his heart, the burden of being an adult. So poet is saying बचपन में ना my spirit, my soul, my emotions were very light as a feather that flies in the sky. मैंने चिड़िया के फेदर की तरह हल्का दिल हुआ करता था. आज दिल बहुत भारी हो गया. Now he goes to the summer pool, can hardly cool the bro on my bro. So now he goes to the pool, स्विमिंग पूल जैसा पूल में नहा लेता है, लेकिन वो अंदर में जो फर्बर ऑफ द ब्रेन है, जो फ्रैंटिक एटीट्यूड है, वो जो टेंस है, वो जो एंजाइटी है, वो जो पैनिक है, वो नहीं खत्म होता. Now poet goes to the swimming pool, but the swimming pool can hardly destroy or decrease the fever on his brow. मतलब अब चेहरे पे जो चिंता है, वो एंजाइटी है, जो टेंशन है, जो डर है, वो अब कम नहीं होता. So when poet used to be on the swing, जब झूलता था तब दोनों साइड से हवा जाता था, ऐसा लगता था कि चलो
बर्ड उड़ रही है, लेकिन अब दिल बहुत हेवी हो चुका है, चिंता हो चुका है। आपने देखा होगा बड़े कभी कभी एक नहीं दो दो दवा खा के सो रहे हैं। कोई प्रेशर का दवा खा रहा है, कोई शुगर का, कोई डायबिटीज का, किसी को स्लीपिंग पिल चाहिए, कोई वेलियम खा के सो रहा है। कोई इतना टेंस्ड हो गया है कि वो बिंज वॉचिंग कर रहा है। सो पीपल आर मोस्ट पीपल आर वर्क अल्कोहलिक। जैसे अल्कोहल में नशा हो जाता है, आजकल वर्क अल्कोहलिक हो गया है, मतलब काम ही नशा हो गया, अभी बावले हो गए हैं मैक्सिमम लोग। ओके, कुछ लोग तो नींद में भी गड़बड़ा रहे हैं। ओके, और बड़ाए भी क्यों ना, वर्क फ्रॉम होम हो रहा है। सो इन दिस काइंड ऑफ कंडीशन, poet is saying the summer pool, when he goes to the pool and in the summer pool he relaxes, but the fever from his brow does not go. इसका जो चिंता है वो दूर नहीं हो रहा है। I remember the fig tree is dark and high. Poet is saying को याद है क्या? The fir tree is dark and high. Poet is saying वो जो fir is the name of a tree, वो poet को याद है। इट्स लाइक क्रिसमस ट्री, इससे हो जाता है। स्लेंडर टॉप लिखा हुआ है ना, ऊपर में जाके पतला हो जाता है। सो पोएट वाज अ स्मॉल चाइल्ड, ही यूज्ड टू थिंक दैट दिस ट्री इज टचिंग द स्काई। बच्चे तो बच्चे ही होते हैं। The poet thinks that I used to think the slender top, मतलब ये जो fruit ट्री का जो टॉप मस्त पोर्शन है, जो पतला है, वो नीचे से देख के लगता था इट इज टचिंग द हेवन, हेवन में स्काई। इट वाज अ चाइल्डिश इग्नोरेंस। बच्चे को पता नहीं होता ना, वो तो खिड़की के बाहर बोलते भूत आएगा, वो विश्वास कर लेते हैं। वो विश्वास कर लेते हैं कि सेंटा क्लॉज गिफ्ट लेके आता है, और विश्वास सब कुछ कर लेते हैं। बच्चे मासूम होते हैं। So poet says, I remember the fig trees, which was very high, very dark in color. I used to think, poet used to think as a child, that the cylinder tops were close against the sky. Poet used to think कि cylinder top जो है आसमान को छू देता है. It was a childish ignorance. But now it is a joy to know I am farther away from heaven. Poet is saying, it is a little joy to know I am farther away from heaven when I was a boy. Poet is saying कि अब हम इतना knowledgeable हो गए, अब मेरे पास ignorance नहीं है, वो बचपना नहीं है, वो childishness नहीं है। अब हम बड़े हो गए, adult हो गए, knowledge हो गया, PhD है, MPhil, okay, master degree, MBA, CA, सब degree हो गया, he is not ignorant. But he's saying there's a little joy in this. इस adult knowledge में ना खुशी नहीं है, इसमें इत्मीनान नहीं है, इसमें सुकून नहीं है, इसमें मन हल्का नहीं हो रहा है, इसमें बेचैनी है, इसमें एंजाइटी, इसमें टेंशन है, फ्रस्ट्रेशन है, डिसअपॉइंटमेंट है, पिल्स खा के लोग सो रहे हैं। So poet is saying it was childish ignorance, मतलब वो childish ignorance जो था, वो बचपना था, वो ignorant मैंने unawareness था, वही बेहतर था। Poet is saying now it is little joy, अब मैंने बहुत कम ही खुशी है, क्या? कि to know I'm farther from heaven when I was a boy. Poet is saying when I was a boy, I was nearer to heaven. मतलब वो बचपना जब हम थे तो वो जन्नत के करीब थे। अब बड़े होके इतना सारा चीज समझ के जान के अब वो खुशी नहीं रहा। Now there's a little joy in what? Little joy in being an adult, little joy in being away from heaven. There's a little joy in being so responsible as an adult. But when he was a child, he was nearer to heaven. He was a fool, he was ignorant, he was not aware. वो बचकाना हरकतें थी। ओके, मिट्टी घरौंदे बनाना, उसको तोड़ना, ये मेरा तुम्हारा, वो बचपना था। ओके, वो छोटा छोटा टूटा टूटा सामान को पैकेट में रखते थे, खजाना समझते थे। 2 रुपया को, 2 रुपया का अगर 5 दिन इनकम हो जाए तो अपने आप को मिलियनियर समझते थे। हाँ, उससे ROI नहीं होता था, उससे पोर्टफोलियो इनकम नहीं होता था, उससे यू कांट बाय ए रियल स्टेट। वो इग्नोरेंस था, वो चाइल्ड इग्नोरेंस था। बच्चे बोलते ना आज तो राजा ही बन गए। क्यों? अरे दिवाली में हमको 200 रुपया, तो 200 से राजा समझते हैं, यहाँ 200 करोड़ वाले सुसाइड कर लेते हैं। सो वो चाइल्डहुड इग्नोरेंस था, वो बचपना था। बट पोएट इज सेइंग नाउ व्हेन ही इज एडल्ट देयर इज लिटिल जॉय। अब वो खुशी नहीं है। क्यों? बिकॉज नाउ आई नो आई एम अवे फ्रॉम हेवन, आई एम फादर वेरी अवे फ्रॉम हेवन। अगर मैंने जॉय, हैप्पीनेस, ब्लिस, ब्लेस्ड, उससे दूर हो चुका है। बट व्हेन ही वाज अ चाइल्ड, व्हेन ही वाज अ बॉय, ही वाज नियरर टू हेवन, ही वाज नियरर टू हैप्पीनेस, ही वाज नियरर टू जॉय। Now poet is away from it.
So this poem is remembering back to the childhood life. It's about nostalgia. It is about how hectic adult life is, and most people wants to look back on the childhood days. And childhood days, even the painful memory, when you remember, you laugh at it. ये कैसे मार खाया था, कैसे मम्मी मारी थी, चम्मच से आज बिता गए, and people smile and they show it. It's so much of pride. Yeah. It's weird. Memories have strange role to play. मार खाया चम्मच से, वो भी सबको हंस हंस के दिखाते हैं. Memories are very weird. And happy ones make people cry. The happier ones, they make people cry, and the sad one makes people laugh. So memories are very weird. Nostalgia comes swiftly when you're old, and looking back on boyhood years, childhood years, even unhappiness gives you a certain kind of happiness. तो वो बचपन का दुख का बात भी याद आके ना लोगों को गुदगुदी जैसा होता है. So this poem is a celebration of childhood. This poem is asking us to hold on to the innocence of a child. Of course, we'll be adult, but then the child in us should not die. This is what I feel about the poem. So poet has a very strong attachment to his childhood, and especially his brother is dead. So there are things that is related to his brother who is no more. There are things that is related to his childhood which is no more. So poet is making an ode to his childhood, and since we almost all of us, have very fond memories regarding our childhood, so this poem connects to all of us across culture, across religion, across gender. So thank you for watching the video, and if you have found this video of any meaning, please do share it with your friends who might need it for their exam. And if you have a question, write in the comment box. Thank you for watching the video.